Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start with the first part of your chemistry, that is part 1, in which we have to deal with the few chapters. We are starting with the electrochemistry. So what is electrochemistry? Electrochemistry is the study of electricity and how it relates to the chemical reactions. In electrochemistry, electricity can be generated by the movement of the electrons from one element to the another. In the reaction is known as redox reaction. So dear student, due to the passage of the electrons which are flowing, electricity is generated. And let me tell you, the reactions which are going to take place in this chapter is completely redox reaction. So we are going to talk about the give and take of the electrons in this particular reactions. To study the electrochemistry, we are going to start with a very simple cell, that is copper zinc voltaic cell. It is also called galvanic cell. It is also called Daniell cell. So it can be named in the various ways and you will be getting it in the exam. So dear students, we are going to see it in detail. When we produce the chemical energy, that is chemical energy is converted into electrical energy, we call it as an electrochemical cell. Now very important, this is done by the spontaneous reaction. Spontaneous reactions are the reactions which are taking place by its own, अपने आप होने वाले reaction. So dear student, you are able to see there are two beakers in which two electrodes are there. In first beaker, zinc rod is there. In second, the copper rod is there. In first beaker, zinc sulfate solution is there. In second, it is copper sulfate solution. And I am explaining you the construction of this particular Daniell cell, or you can say galvanic cell. We also go for having attachment of the voltmeter over there, including the battery. And we also have the salt bridge, which is containing either KCl, KNO3, ammonium chloride, or any particular gelatinous material. So how it is functioning? Dear student, the thing is that from the zinc, the two electrons will be lost over there, and the zinc will be coming out in the solution as Zn plus, wherein the copper is going to receive that two electrons, and copper will be coming out in the solution as a Cu2 plus ion. So this is what is going to make the flow of the electron. So in this particular case, what you need to remember, LHS on the right and on the left hand side, the oxidation is taking place. Oxidation means loss. Who is creating the loss? Zinc is losing the electron and converted into Zn2 plus ion. If we talk about the right hand side, we go for having the reduction reaction. When electrons are gained, who gain the reaction? Who gain the electrons? Copper gains the electrons over here. So what is the observations? Zinc get oxidized, way of Zn electrode will be increasing. Copper 2 plus get reduced, way of the copper that is going to get changed, electrode increasing. Electrons will be flowing from anode to cathode. Current will be flowing from cathode to anode. This is what you have to understand very clearly, that जब electron का जो flow है उसके opposite direction में current flow होगा. Means if the electron is flowing from zinc side, that is anode, towards the cathode, then the electron will be flowing from cathode towards the anode. So it is opposite one taking place over here, and that is just because of the movement of the electrons. So Zn क्या हो रहा है? Oxidize हो रहा है. Way of the Zn electrode reduces. Zn का जो rod है वो कम होता जाएगा, और आपका जो copper है उसका rod जो है वो increase होता जाएगा. Okay, very important one, that is about the salt bridge. हम जो बीच में salt bridge रख रहे हैं उसका functioning क्या है? Salt bridge maintains the electrical neutrality. Dear students, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलिटी चेंज हो रही है, आपका जो Zn सल्फेट वाला बीकर है उसमें Zn की क्वांटिटी बढ़ रही है, Zn2 प्लस की क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे ही CuSO4 वाले में Cu2 प्लस की क्वांटिटी बढ़ रही है. तो यहाँ पे जो आपके नेगेटिव आयंस है वहाँ पे मेंटेन होने चाहिए. द नंबर ऑफ द आयंस शुड बी मेंटेन इन बोथ द बीकर. सो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. कंप्लीट द इंटरनल सर्किट. जब तक आप सॉल्ट ब्रिज नहीं डालोगे तब तक आपकी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी और करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सॉल्ट ब्रिज. हम कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर सकते हैं? दिस कैन बी आस्क्ड एज एन ऑब्जेक्टिव. टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी दैट द साइज ऑफ द केटायन एंड एनायन शुड बी सेम. जितनी साइज आपके केटायन की है, जैसे सपोज कर लो कि आप KCl यूज कर रहे हो, तो जितना बड़ा आपका K है उतना बड़ा आपका Cl होना चाहिए. KNO3, तो जितना आपका K है उतना आपका NO3 होना चाहिए. मीन्स द साइज ऑफ द केटायन एंड एनायन शुड बी सेम. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the mobility of the cation and anion should be similar.
जितनी स्पीड से आपका K कोई भी पर्टिकुलर बीकर की तरफ भाग रहा है, उतनी ही स्पीड से आपका नेगेटिव चार्ज भी है जो ऑपोजिट बीकर की तरफ जाना चाहिए. मीन्स द मूवमेंट, मोबिलिटी, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ योर कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जल्दी पहुंच जाए और एक लेट से पहुंचे. इट शुड बी देयर, बोथ शुड बी गो ऑन द परफेक्ट पर्टिकुलर टाइम. इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज, सी सब पहले जब हमने जैसे ही सॉल्ट ब्रिज डाला हमारे वोल्ट मीटर पे कुछ करंट दिखेगा, कुछ अमाउंट दिखेगा. सो इफ वी टॉक अबाउट द जिंक कॉपर डैनियल सेल, 1.1 वोल्टेज इज बीन सीन. सो ये डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर हम बाहर से अगर हम पोटेंशियल्स देते हैं तो क्या होगा, फंक्शनिंग ऑफ द सेल व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सी माइनस ई ए, ई इलेक्ट्रोड माइनस ई कैथोड. यहाँ पे आ रहा है 1.1 वोल्ट. अच्छा, क्या होगा अगर हम 1.1 वोल्ट बाहर से अंदर रिलीज करें, इफ वी आर प्रोवाइडिंग. इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1, हम जो बाहर से करंट दे रहे हैं वो अगर 1.1 से कम है तो सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी. मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट, रिएक्शन विल बी रिवर्स, ऑपोजिट हो जाएगा. अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम ऑपोजिट, दैट इज एनोड टू कैथोड. जब ये ऑपोजिट कंडीशन हो जाती है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं. जब ये ऑपोजिट हो जाता है वी कॉल इट इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, एंड इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू द अमाउंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर, मीन्स 1.1 वोल्ट आप बाहर से भी दे रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा रिएक्शन एंड द सेल विल स्टॉप ऑपरेटिंग. सेल वहां पे बंद हो जाएगा ऑपरेटिंग होना. ओके, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पहले एनोड लिखिए, फिर सॉल्ट ब्रिज लिखिए, फिर कैथोड लिखिए. तो एग्जांपल है Zn/Zn2+, और नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है 1 मोलर. अगर आपको नहीं दिया है तो आप एक्यूएस भी लिख सकते हैं. डबल स्लैश, दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज, एंड कैथोड 2+, दैट इज योर aqueous solution that is converting into copper. So dear student, this is the representation. Two more representations I have shown you over here, that is copper versus your zinc nitrate, silver nitrate solution, and one is there, that is nickel, along with that your again silver nitrate solution. So how you have to represent it, that is formed over here. Still I give you few more example for practice. So for today's this much particular theory is enough. We are going to proceed the chapter with the further topics in next video.